वेलकम टू द कोहली इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। डेरिवेटिव शुरू करन लगे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। आओ डिस्कस करिए पहला पैरामीट्रिक के संबंध विच। बारिश आएगी, बहुत बढ़िया मौसम बन रहा है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस जदों एक्स वाई किसी होर वेरीएबल के थर्ड वेरीएबल के इक्वल दिते गए हैं तो असी पैरामीट्रिक की इक्वेशन कहने हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू cos t। जिहड़ा t है ये थर्ड वेरीएबल हो गया, ये साडे कोले पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ डेरिवेटिव करना सीखना है भी आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ dy upon dx किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सुनो, फाइंड dy upon dx x is equal to sin t, y is equal to cos t। Differentiate both sides with respect to t। dx over dt, d over dt, sin t cos t। Differentiate both sides with respect to t, dy over dt, d over dt, cos t minus sin t। sin the derivative cos, cos the derivative minus sin। We have to find dy upon dx, dy over dt over dx over dt, dy over dt minus sin t over cos t minus tan t। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, if x is equal to 3t square plus 5, y is equal to log t, find dy upon dx solution। x बराबर 3t square plus 5। ओके, differentiate both sides with respect to t, dx over dt, d over dt, 3t square plus 5। separately differentiate d over dt 5, 3, 2t, 5, 0।
60 y is equal to log t. Differentiate both sides with respect to t. dy over dt, d over dt, log t, log t ਦਾ 1 over t. Now dy upon dx, dy over dt over dx over dt, dy over dt 1 over t, dx over dt 60 1 over 6 t square. Okay, which is the required answer? A first sum, a second sum. थर्ड सम डिस्कस करते हैं ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦਾ। If x is equal to e the power t, y is equal to log 3 plus t, find dy upon dx. Solution: x is equal to e the t, y is equal to log 3 plus t. Differentiate both sides with respect to t. dx over dt, d over dt, e the power t, e dt. Differentiate both sides with respect to t. dy over dt, d over dt, log 3 plus t, 1 over 3 plus t, log x ਦਾ 1 over x. ਅੱਗੇ log ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਓਕੇ 1 over 3 plus t, d over dt 3, 1 over 3 plus t 0 1, 1 over 3 plus t. Now dy upon dx, dy over dt, dx over dt 1 over 3 plus t e the power t. Sum number 4. If x is equal to
sin theta and y is equal to tan theta. Theta is a parametric. Then find dy upon dx. dy upon dx अपन ने फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन x is equal to sin theta. Differentiate both sides with respect to theta. dx over d theta, d over d theta, sin theta, sin theta da cos theta, y is equal to tan theta. With respect to theta, dy over d theta, tan theta, secant square theta. Now dy upon dx, dy over d theta, dx over d theta, dy over d theta, secant square theta over sin theta. Which is the required answer? जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ find dy upon dx at theta is equal to pi upon 4, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਥੀਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ upon 4 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. secant square pi upon 4 sin pi upon 4 secant 45 degree under root 2 the whole square sin 45 1 upon under root 2 2 into under root 2 upon 1 2 under root 2 which is the required answer. बस ये गल ध्यान रखनी है, जे तुहानू थीटे की वैल्यू दिती हुई है तो एंड दे उत्ते जाके तुसी फिर वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देनी है. समझ गए ना? सम नंबर 5 डिस्कस करते हैं. पैरामीटर की है जदों x ਜਾਂ y ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਓਕੇ, if sum x is equal to sin inverse t and y is equal to cos inverse t, find dy upon dx. ये असी फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन
x equal to sin inverse t. Differentiate both sides with respect to t. Dx over dt, d over dt, sin inverse t, 1 over square root of 1 minus t square. जे अगर t का शो करना था 1, y is equal to cos inverse t. Differentiate both sides with respect to t. dy over dt, d over dt, cos inverse t, minus 1 over square root 1 minus t square. Now dy upon dx, dy over dt, dx over dt, minus 1 over 1 minus t square, 1 over square root 1 minus t square, minus 1. Okay. Sum number 6. If x is equal to theta plus sin theta and y is equal to theta minus cos theta, find dy upon dx. ये फाइंड करना है. Solution x is equal to theta plus sin theta, y is equal to theta minus cos theta. Differentiate both sides with respect to theta. dx over d theta 1, sin का की बन गया cos. Differentiate both sides with respect to theta. dy upon d theta 1 plus sin theta, 1 plus sin theta. Now dy upon dx, dy over d theta, dx over d theta, 1 plus sin theta, 1 plus cos theta. Which is the required answer? Okay. Sum number 7. If x is equal to a the power t and y is equal to e the power t, find dy upon dx,
solution x is equal to a the power t, differentiate both sides with respect to t, dx over dt, d over dt a raised to power t, a the power t log a to the base e। लगाना लगाओ, नहीं लगाना ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है। फिर अंडरस्टूड e है y is equal to e the power t, differentiate both sides with respect to t, dy over dt, d over dt, e dt, e dt। okay, now dy upon dx, dy over dt, dx over dt, e raised to power t over a raised to power t log a to the base e। Sum number 8, f x is equal to a the power sin theta and y is equal to a raised to power cos theta। ठीक है, then find dy upon dx, solution x is equal to a raised to power sin theta, differentiate both sides with respect to theta, dx over d theta, d over d theta a raised to power sin theta, a raised to power sin theta log of a to the base e, y is equal to a raised to power cos theta, differentiate both sides with respect to theta, dy over d theta, d over d theta a raised to power cos theta, a raised to power cos theta, d over a raised to power cos theta log of a to the base e। पावर दा करना नहीं भुलना। ओके, a raised to power sin theta log a to the base e, sin the cos, a raised to power cos theta log a to the base e minus sin theta। now dy upon dx, dy upon d theta, dx upon d theta, dy upon d theta a raised to power cos theta
log a to the base e minus sin theta a the power sin theta log a to the base e into cos theta. Okay, sin over cos a बन गया tan theta a raised to power cos theta minus sin theta, sin ऊपर शिफ्ट करता विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ।